Hare Krishna, good evening and welcome all of you all for this Saturday evening Bhagavatam class. So today is the eve of Diwali. So we are all prepared for Diwali. So I think mood will not be for Bhagavatam, but still we have to make our mood for Bhagavatam because that is more important. Now, why Bhagavatam is important? What is the purpose behind the importance of Bhagavatam? कि जब हम घर में जाके धनतेरस का पूजन कर सकते हैं, लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं, वी कैन डू सो मेनी पूजास, देन व्हाई व्हाट इज इम्पॉर्टेंट अबाउट भागवतम? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट मेक्स इट डिफरेंट? व्हाट मेक्स इट स्पेशल? यस, व्हाट मेक्स भागवतम स्पेशल? व्हाट्स द स्पेशलिटी इन लर्निंग भागवतम? व्हेन वी आर हैप्पी डूइंग आवर वेरियस pujas like Lakshmi Pujan, then 2 days after that we are going to have Govardhan Puja, and then today Dhanteras Puja. I don't know what people do on Dhanteras Puja. The Vidhi is totally different, and what people do is I don't know. It's very funny. On the mic. Yes, tell me. भागवतम क्लास अटेंड करने से क्या फ़ायदा है? अभी आप लोग इतने मेहनत से हर सैटरडे आते हो, क्या बेनिफिट क्या है? बाद में मालूम पड़ा प्रभु जी वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। सैटरडे कम से कम आउटिंग तो करते थे, वीकेंड बाहर तो निकाल देते, पिक्चर हमने देते, मॉल में घूमते थे। कैसा आप लोगों का मॉल वॉल सब छुड़वा के मैं क्लास में बुलाया हूँ यहाँ पे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर कमिंग ऑन दिस डे। इट्स अ ग्रेट थिंग। सो टेल मी व्हाट मेक्स यू स्पेशल बाय अटेंडिंग भागवतम? व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट भागवतम? And when we can do very nice karma kand and very nice puja, vrat and every other things. So what is the best thing? Tell me. आपने डिफरेंस बोल दिया। कर्म कांड से बाहर आना है तो भागवतम is the only thing. But karma kand is as per the Vedas, mind you. We are not exceeding the Vedas. But you will not achieve or you will not get out of the cycle of birth and death. Something more than that. See, please understand this. What is the speciality of Bhagavatam and the difference of Karma Kand? The difference is very clear. When you are doing Karma Kand, various pujas, vratas, you are God fearing. But by studying Bhagavatam, by reading Bhagavatam, by understanding the relation between a devotee and God, you become God loving. So that is the transformation which we are all looking out for. From God fearing to God loving. So that is the greatness of Bhagavatam. So we were studying the 5th chapter. In the 5th chapter, what is Lord trying to say? What is Vyasadeva, Narad Muni trying to tell Vyasadeva? Vyasadeva has written the entire 4 Vedas, described the 4 Vedas. He has cut the 4 Vedas into 4 parts, and he has written the 18 Puranas. All the details are given. Then what? After doing all that, still he was sad. And why was he sad? Because he has mentioned everything about God, but not specifically the Bhagavata Dharma. And Bhagavata Dharma means it makes you God loving. People just do devotion because they are God fearing. What's the big deal in fearing God? भगवान से डर के क्या करना है आपको? भगवान से क्यों डरना है? And first and foremost, Karma Kand is the first step to go towards Bhagavad Dharma. Mind you, one may say, Prabhuji, tomorrow is Lakshmi Pujan, or day after tomorrow is Lakshmi Pujan, we have to do Lakshmi Pujan very nicely. Please tell us the good rahasya of that. Mind you, though, tell me how many Lakshmi Pujan has Bill Gates done? How many Lakshmi Pujan has all the so-called rich Arabs who are in the Gulf countries, who are billionaires and trillionaires? How many Lakshmi Pujan they have done? They have not done any Lakshmi Pujan, but still, you people, somebody was there, very poor fellow, whatever little assets he has got or whatever resources he has got, he will be using that to do some Lakshmi Pujan, and in the end he will say, मैंने Lakshmi Pujan किया, फिर भी मेरे यहाँ तो धन की वर्षा तो नहीं हुई, और I am not going rich. No. Money comes only by karmas. So what is the speciality of doing Lakshmi Pujan? The purpose of doing Lakshmi Pujan itself is to purify your source of income. Money can be earned anyhow by anyone,
But by doing Lakshmi Pujan, you are purifying your source of income and your source of or the mode of expenditure. There are so many people who are spending on meat eating, intoxication, illicit sex and gambling. They are busy spending money on that. But what makes it special? By doing Lakshmi Pujan, what happens? You get the money and you get the method by which you can spend the money correctly, in the right manner, in the right way. So that is the main purpose of understanding Bhagavad Dharma. And that is what Vyasdev is telling, Narad Muni is telling Vyasdev. My dear Narad Muni, Vyasdev, you have written everything about God, but you have not mentioned specifically about the loving relation between God and His devotees and how we have to develop that love with Him. You have not described the glories of the Lord in specific. And unless and until that is not described, people will be busy in Karma Kand. And in Karma Kand, what will they do? They will take the things which they like and leave the things which they don't want. Where in the Shastra it is written we have to gamble on Diwali day? Where in Shastra it is written that we have to do n number of nonsense things on Diwali day? It's not mentioned in anywhere in any Shastra. But what happens? It is allowed. This is allowed. On Diwali day, gambling is allowed. So we take the shelter of such a provision and try to enjoy on these purposes. So the most important thing we have to understand is that we are some way or the other wrongly misinterpreting the Shastra. Our own way, our own whimsical way. Please do not do that. And that is the main purpose why Vyasdev was being instructed by Narad Muni. And over and above, Vyasdev was also not happy after writing so much. Today I see so many people writing so many books. Can anyone write more than what Vyasdev has written? But still there are book writers writing about God as if they are interacting with Him daily. That is the problem with modern day society. So it's better that we do Dharma as per the Shastra. So first and foremost, we were discussing about the various aspects of fishing. Can anyone give me a fast recap of what we had studied earlier, Mataji? Which two verses before. Just read the translation of the 2 verses before. 2 verses. 15, yeah. The people in general are naturally inclined to enjoy, and you have encouraged them in that way in the name of religion. This is verily condemned and is quite unreasonable. Because they are guided under your instructions, they will accept such activities in the name of religion and will hardly care for prohibitions. Yes, they will hardly care for the prohibitions. What all the prohibitions have been told, people will not care, but they will care for what is nice, what is pleasing them, they will do. Like if, when it comes to Ganpati, when it comes to like Ganpati festival, what is the first thing which strikes the mind? Modak. We are inclined to eating more of modak rather than trying to please Lord Ganesha in any way. Similarly, when it comes to Diwali, it comes how many nice dresses I can buy, what all nice gadgets I can buy. So many things. People are busy buying. The best part is on Dhanteras, most of the people जाते हैं बर्तन लोटा खरीदने. क्यों? सुना धन, कान खड़ा हो गया. अरे यहाँ धन किसको कहा गया है, किस चीज़ को धन को कहा गया? प्लीज अंडरस्टैंड दैट. नोबडी इज रेडी टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आई होप ऑल ऑफ यू फॉलोड एकादशी yesterday. Yes. Actually, Lakshmi Pujan started yesterday. Rama means what? Lakshmi Devi. लक्ष्मी देवी कल ही समुद्र मंथन से कल के दिन, that is on the day of एकादशी, प्रकट हुई. So if someone is lighting the diyas, especially those not the Kalyug diyas, we have got Kalyug diyas, not the Kalyug diyas but the actual diyas, then
yesterday, or rather from Ekadashi day, Rama Ekadashi day se, you have to start doing that. Second, on Treyodashi. Now here, this year, it is half today and half tomorrow. It is like that. So some people are going to do it tomorrow, some people are going to do it today. Fine, whatever it is. On Dhanteras day, it was Dhanvantari who came with three things: Triphala, Ayurveda and nectar. तीन चीज़ लेके आए. Triphala is a very famous Ayurvedic aushadhi. Then you have his entire Ayurvedic full knowledge, that is a grantha. And last but not the least, nectar. That was for the Devatas and Asuras, which they pulled, and there was a big fight. And the best part is the Asuras took the nectar, but none drank. Why? मैं पहले पीऊँगा. उस झगड़े में कोई नहीं पी रहा. ठीक है, ये भी कृष्ण की लीला थी. So when the nectar came, dhana means, actual dhana is your health. You may have all the money in this world, but if you are not physically fit, what will you enjoy? Can you enjoy with the money? So actual dhan, that is the nectar, what is given is the dhan of physical health. That is why Ayurveda was given on Singh. On the day of Dhanteras, you are on the northeast side of your house, you are supposed to keep the photo or idol. Nobody keeps idol, but at least the photo of Dhanvantari, Lord Dhanvantari. It is said that you are supposed to keep the medicine what you all eat, whatever medicine. Somebody is eating BP, somebody eating diabetes, someone is eating whatever medicine. Keep it on that side and do the puja. It is said that the medicine becomes very potent. The potency of the medicine increases by keeping it on that day. People are busy buying lota and bartan on that day. Bartan, lota, and somebody नहीं आप गोल्ड लेंगे, धन और बढ़ेगा. अरे धन, ये धन तो आपको छोड़ के जाना है, भौतिक धन छोड़ के जाना है, तो वो क्यों संग्रह करें? संग्रह तो वो करो. हाँ, उस भगवत प्राप्ति में आपको सबसे बड़ा चीज़ की क्या ज़रूरत है? अच्छा शरीर, अच्छा हेल्थ. इफ़ यू हैव अ गुड हेल्थ, देन यू कैन डू devotion service. With headache, backache, hip ache, how can you do devotion? It becomes difficult. So it's better you have a good health. So let's pray to Lord Dhanvantari to give us good health so that we can do lot of nice devotion service and become closer to God. And by doing Bhagavad Dharma, we will become God loving. So we have to shift our paradigm from God fearing to God loving. हम लोग पहले से भगवान, मैं बहुत मानता हूँ प्रभु जी, शनिवार को नहीं, रविवार को नहीं, मंगलवार को नहीं, and all that. That is God fearing. But then from there we have to shift our paradigm to God loving. That is what is going to we are going to learn. And read the next verse also, Mataji. The Supreme Lord is unlimited. Only a very expert personality retired from the activities of material happiness deserves to understand this knowledge of spiritual values. Therefore, those who are not so well situated due to material attachment should be shown the ways of transcendental realization by your goodness through the descriptions of the transcendental activities of the Supreme Lord. So what is the second instruction? First instruction was, you are given what is favorable to them, they will take. You are not given a clear-cut instruction. And the second instruction was, it is still more important than the first one. It says the Supreme Lord is unlimited. It is 1.5.16. Okay, Bhagavatam, first canto, 5th chapter, 16th verse. Again, those who are having their mobiles, you can Google it out. So the Supreme Lord is unlimited. Only a very expert personality retired from activities of material happiness. जो material happiness ढूंढने के चक्कर से थक चुका है या वो कोशिश छोड़ चुका है, material happiness, then deserves to understand this knowledge. So Bhagavatam is again part 2. First point is from God fearing to God loving. Part 2 is one who has detached himself from material happiness. He deserves to understand the knowledge of spiritual values. Therefore, those who are not well situated due to material attachment, अभी तक material attachment छूटा नहीं है, they are not situated well, should know the way of transcendental realization.
should be shown the way of transcendental realization. उनको राह दिखाने के लिए, उनको मार्ग दिखाने के लिए this Bhagavatam has to be written. This is the instruction given by Narad Muni to Vyasdev. By your goodness, goodness through description of the transcendental activities of the Supreme Lord. So just by hearing the supreme transcendental activities of the Lord, we are going to go from the mode of ignorance and passion to the mode of goodness. रजगुण और तमोगुण से हम सतगुण की तरफ जाएंगे. Now today's important shloka 1.5.17, which is a very important shloka, and this shloka is somewhere or the other actually is reflecting our way of devotion. त्यक्त्वा सर्वधर्मं धर्मान् चरणाम्बुजं हरेर भजनम अवपक्वो तथा पठेत नो ततो यदि यत्र क्वा व अभद्रम अबुद्ध अंश्य किम को वार्तः अतो अभजताम स्वधर्महम. Now this he is talking about two categories of people. Here Narad Muni is talking of two categories of people. One, first line, त्यक्त्वा सर्वधर्मान चरणाम्बुजम हरेर. सभी कर्म कांड को छोड़ के जो व्यक्ति भगवान के चरण को पकड़ लिया है, उसके लिए भी बोला है और कर्मकांडी के लिए भी बोला है. भजनम अपक्वो, हिंदी में हम लोग बोलते हैं पका हुआ, अभी तक पका नहीं है. इधर भगवान कह रहे हैं, इधर नारद मुनि कह रहे हैं, अगर भजन उसका अपक्व हो, अपक्व मतलब अभी तक कच्चा है, पक्का नहीं है, चलेगा. तथा पठेत ततो यदि, अगर यदि है तो भी, अगर वो पठेत मतलब गिर जाता है, ही फॉल्स डाउन फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज और realm, he is not losing much. He will come back fast to devotion service. But what did he say? कोवार्थ, what is the फायदा, what is the benefit? आपटो, आपटो मतलब क्या मिलेगा उसको? अभजताम स्वधर्मतः, जो खुद का रोज सुबह उठ के अपना घर पे पूजा पाठ करता है, वेद मंत्र का जाप करता है, शनिवार है तो हनुमान चालीसा पढ़ेगा, मंगलवार है तो गणेश चालीसा पढ़ेगा, ये वो सब करेगा, वो कुछ प्राप्त नहीं करेगा, बट ये व्यक्ति प्राप्त करेगा. सो हियर नाउ लेट रीड द ट्रांसलेशन. हु विल रीड द ट्रांसलेशन? हाँ, रीड. One who has forsaken his material occupations to engage in the devotional service of the Lord may sometimes fall down while in an immature stage, yet there is no danger of his being unsuccessful. On the other hand, a non-devotee, through fully engaged in occupational duties, does not gain anything. He may do perfect कर्मकांड, सुबह उठ के यज्ञ करेगा, अपना हवन करेगा, ये करेगा, वो करेगा. He does not gain anything. Why? He doesn't gain anything tangible. He may get material things. चलो बच्चा नहीं हुआ तो बच्चा हो गया, शादी नहीं हो रही तो शादी हो गई, क्या प्रमोशन नहीं हो रहा है, या एडमिशन नहीं हो रहा है, या गाड़ी नहीं हो रहा है, बंगला नहीं हो रहा है, फैक्ट्री 10 का 1 का 10 फैक्ट्री हो गया. दैट इज ऑल नॉन टैंजिबल. यू हैव टू लीव एंड गो. सो कर्मकांड विल गिव यू ओनली material benefits, but it is not wrong. It is the first step towards what? Going towards pure devotion. You see, it's like, you know, when you go to nursery class, a child will go, first he will cry, he will not want, doesn't want to go to school, so mother has to give him some lollipop and chocolates and toffees and some pastries and wafers, and that's what is given in, you know, small kiddies tiffin box. That is given. Why? At least for the sake of the chocolate, at least for the sake of the cake, the child will go and sit in the school or in the class. He is not going to learn anything. He is not going to learn a plus b the whole squared or a plus b the whole cubed. Kya hone wala? He is not going to learn all that. He is just going to sing some nursery rhymes and come back. But that is to get him in tune. In future he can educate. So similarly, Karmakand also offers you various varieties of benefits, but they are like
chocolates and pastries, what is given for the same. But by that, the child will slowly should shift. But the problem is, if one doesn't read Bhagavatam, he doesn't shift to that paradigm, but he still stays in, but I want to go to school, as long as I'll go to school, you'll give me cakes and pastries and wafers. That अंडरस्टैंडिंग में वो अटक जाता है वो व्यक्ति. सो यहाँ पे अगर गिर जाता है व्यक्ति, इफ ही फॉल्स डाउन ऑन डिवोशन, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट? हाउ डज अ पर्सन फॉल डाउन इन डिवोशन? हाउ डज समवन कैन अंडरस्टैंड? लेट अस अंडरस्टैंड दिस. When it's a very important factor, right? Falling down in devotion is an important factor. So how do we understand that? He has not, he is contemplating on the previous, he has not left that material enjoyment that is. See, we are talking here about that segment. I mean, generally, those who understood, they have attended the earlier classes and they have understood material benefits are not there. There's no real happiness. You know, that necklace वाला एग्जाम्पल हुआ या रसगुल्ला वाला एग्जाम्पल हुआ, everyone knows that is convinced, and then he takes up into devotion. And then also, how does he fall down? Very good, very nice point. That is, here Lord is not talking about aparadha. Aparadha throws you totally out of devotion. See, there are various aparadhas. What are the various aparadhas in devotion life? What are the various aparadhas one does? नाम अपराध, धाम अपराध एंड वैष्णव अपराध. नहीं, एक और है. हाँ, सेवा. Extra prasadam for you. Very nice. So, it is 4 type of aparadha are there. One is नाम अपराध, धाम अपराध, seva aparadh and Vaishnava aparadh. The most potent and dangerous is Vaishnava aparadh. So first and foremost, धाम अपराध. धाम अपराध मतलब जब भी हम कोई धाम में रहें, we go to some spiritual place, some तीर्थ स्थान, वहाँ पे we should not fight with the locals because they are all कहीं ना कहीं somewhere special to the Lord. That's why they are born in the धाम. And especially the धाम के जो पुजारी वगैरह होते हैं, पांडा होते हैं, उनसे कभी never turn to a bitter fight. हाँ, okay, they will do their nonsense. You have to just ignore it, try to avoid as much as possible, say Hare Krishna and get out. Otherwise, धाम में किया हुआ अपराध throws you out. My Shiksha Guru, His Grace Rupalas Prabhuji, he is always telling me the story about his Shiksha Guru doing a big धाम अपराध in Radhakund. One of the group members उसका पिक पैकेट हो गया राधा कुंड में, और इतना बड़ा झगड़ा हो गया that they finally caught that person, one of the villager, and they didn't thrash him, but then it went to the police station, this and that, and finally it turned out that that fellow, whether he was stolen or not, it was not there, but that dham aparadh threw his Shiksha Guru out of the spiritual line. Okay, that's what I heard from his mouth. So he has now left the spiritual line and he has gone to someone. So this is ये सब सुनी हुई बात नहीं है, ये सब हमने देखा हुआ है या तजुर्बा किया है. I have seen so many people who have done Vaishnava aparadh and they are literally lost in the devotional world. मेरे सामने कई लोगों को मैं देखा इन माई टिल नाउ का जो जर्नी हुआ है उसमें. सो दिस इज ऑल्सो वेरी डेंजरस. वैष्णव अपराध इट्स लिटरली थ्रोज यू आउट. इट्स लाइक अ बॉम्ब, इट्स लाइक एन एटम बॉम्ब. देन नेक्स्ट कम्स इज सेवा अपराध. सेवा अपराध इज व्हेन यू आर डूइंग सेवा फॉर द डीटीज, especially when you are doing deities for seva for Laddu Gopal or Radha Krishna, you have to be very careful. कहीं especially when ladies are not supposed to touch, those time पे अगर touch कर लिया या भगवान को ठीक से सेवा नहीं की, various things are there, that's a different study altogether. तो सेवा अपराध में भी संभालना है कि सेवा अपराध न हो जाए. बट कृष्ण इस भावग्राही, इसके लिए एंड में माफ़ी मांग लेना चाहिए. कहते हैं भगवान को अगर नहला रहे हो तो थम नहीं लगना चाहिए. द थम शुड नॉट फॉल बिकॉज लॉर्ड इज़ वेरी सॉफ्ट एंड दिस इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर हैंड ऑल्सो.
तो वो लगना नहीं चाहिए। इसके लिए आज भी अगर आप श्रीनाथ जी जाओगे ना तो उसको बोलते हैं श्रम भोग। भगवान को नहला धुला के रेडी करने के बाद उनको दूध और ये खिलाया जाता है, उसको बोलते हैं श्रम भोग। कहीं हमने आपको श्रम नहीं दे दिया हो सेवा करते वक्त, उसके लिए आपको भोग लगेगा। सो इट इज़ लाइक दैट। सो वी हैव टू बी केयरफुल, बट ठीक है, माफ़ी मांग लेंगे तो एक बार भगवान आपको माफ़ कर देंगे। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन मोर इज द नाम अपराध। नाम में कभी जपते वक्त कभी अपराध या नाम के बल पे द 10 नाम अपराध विच इज़ देयर, कभी किसी दिन उसके ऊपर डिटेल में विल डिस्कस। सो दीज आर द थिंग्स, बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ द अपराध माताजी, वी आर टॉकिंग ऑफ वन हु फॉल्स डाउन इन डिवोशन। हाउ डज वन फॉल डाउन इन डिवोशन? Let us understand this from a classical katha from Sati and Shiva. Sati, when her husband, or rather here it's the Guru also you can say, Shiva has told, Lord Shiva has told that, Lord Shankar has told that Lord Ramchandra ji is Bhagavan. फिर भी उन्होंने क्या बोला? संशय। टेस्ट तो बाद में, टेस्ट तो बाद में। 3 थिंग्स आर देयर। पहला चीज अविश्वास या कपट, उनको विश्वास नहीं हुआ। सेकंड संशय, गुरु के वाक्य पे संशय। एंड थर्ड शी वेंट टू टेस्ट हिम, बट आफ्टर कमिंग बैक व्हाट डिड शी से? नो 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 नो, आई डिडंट गो एंड टेस्ट। So she lied. 3 things together caused her to lose her body itself. In the Daksha Prajapati incident, she had to leave. What do we understand in this entire episode? First and foremost, she should not have doubt on the spiritual master's words. Spiritual master's words cannot ever be wrong. And when Lord Shiva is saying, all the most you have to accept it, but still she had doubt more than Vishwas, and then Vishwas नहीं था। See, here are 2 things यहाँ पे समझ लो। डाउट होना, संशय होना ठीक है, बट विश्वास तो रखो। विश्वास भी नहीं था, संशय आपके मन में, सबके मन में आ सकता है। क्या प्रभु जी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होगा नहीं होगा, संशय आ सकता है, बट अविश्वास, फेथ, लैक ऑफ फेथ, दैट इज वेरी डेंजरस। एंड ये दोनों के बाद व्हाट डिड शी से? शी टोल्ड शिव जी, चलो यू आर सेइंग ही इज गॉड, हाउ कैन यू से ही इज गॉड? कैन ही नॉट? ही इज अ फूल, ही इज आस्किंग ट्रीज। पेड़ों को जाके पूछ रहे हैं मेरे सीते को देखा है क्या, मेरे सीते को देखा है क्या, और पेड़ों से आलिंगन कर कि पेड़ बात करेंगे क्या? ये आदमी कैसा भगवान हो सकता है? बोले चलो मैं जाके टेस्ट करने वाली हूँ। टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, मैं बोल रहा हूँ मान लो, लीला कर रहे हैं वो। शिव जी ने बोला, तो उन्होंने बोला नहीं मुझे जाके टेस्ट करना। तो उन्होंने बोला आप जाओ, मैं क्यों आऊँ? तो जब शिव जी ने बोला तब पत्नी बोली, अरे हर चीज़ में बराबर रहते हो, खाना साथ में खाते हैं, साथ में घूमते हैं, साथ में मज़ा लेते हैं, सब कुछ साथ में। हस्बैंड एंड वाइफ आर सपोज टू बी टुगेदर इन ऑल थिंग्स। ऐसे मौके पे क्यों मेरे साथ नहीं चल रहे हो टेस्ट करने के लिए? अब आचार्यगण कहते हैं बहुत अच्छी तरह से, इट इज़ लाइक सपोज पति पत्नी हमेशा साथ में घूमते, साथ में पिक्चर देखते, साथ में होटल में खाते, साथ में गाड़ी में घूमते, मगर किसी दिन पत्नी बीमार हो गई तो उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर बड़ा बड़ा गोली लिख के देगा, इंजेक्शन भी देने का नौबत आ सकता है। तो वहाँ पत्नी बोलेगी आधा आधा नहीं, आधा आधा, मैं गोली खा रही हूँ आप भी 2 गोली खाओ, मैं इंजेक्शन ले रही हूँ आप भी आधा एक इंजेक्शन लो। हाँ भाई, जिसको जो बीमारी है वो इलाज कराएगा। तो शंकर जी बोल रहे हैं भाई यू आर सिक, जाके तुम इलाज कराओ, मुझे कुछ जाने की जरूरत नहीं। तो सीता मैया ठीक है, सीता माता गई और देन यू ऑल नो शी ड्रेस्ड अप एज Sati, sorry, not Sita. Sati went as Sita Mata, and she actually, exactly like Sita Mata, she had
dressed up herself and she was looking like that. But Ramchandra ji immediately saw her and immediately said, "Oh, पिनाकधारी किधर है माते? पिनाकधारी किधर है? यहाँ पे सीते कर रहे हैं, उनको देख के बोल रहे हैं पिनाकधारी किधर है?" बोलते हैं, then she had not a doubt whether I am really looking like Sita or I am looking like Sati. Then she said, "Okay, your God." She accepted and he told, "See, it doesn't look nice. जंगल में अकेला घूमते हुआ अच्छा नहीं लगता है, चाहिए आप please go back to your husband. It is dangerous." So immediately she left. And then when she came back, शिवजी asked, "So टेस्ट हो गया? पूछ लिया?" "नहीं, आपके बात पे विश्वास हो गया ना मुझे, मैं कहाँ से टेस्ट किया?" Third was lie. We may tend to do any one of the three in our devotion or all the three. It is the sequential things. When you lose faith, you start getting doubt. When you start getting doubt, you may do such an activity, but to hide that activity away, you may lie. So these are all sequential things. So one may ask, Prabhuji, so how could she not come out of devotion? You are mentioning here a person who goes into, who falls down in devotion comes back. So even the Bhagavad Gita, Lord says, Shipram bhavati dharmatma shashvat shantim nigacciti kaunteya pratijani name bhaktya pranashyati. Lord says, Api chet suduracharo bhajante mam ananya bhag sadhureva sva mantavya samag vivasito hi satah. What does he say? Api chet sudurachar. सबसे बड़ा दुराचार व्यक्ति क्यों ना हो, अपिछे सुदुराचारो भजनते माम अनन्य भाग, मगर मेरा भजन अनन्य भाग। इसका मतलब ये नहीं कल से आप लोग आ रहे हैं, प्रभु जी आपने बोला है मैं चोरी करूंगा, मर्डर करूंगा और भजन करूंगा, नहीं। वन हु हैज लेफ्ट ऑल दोस एक्टिविटी बट ही इज ए दुराचार व्यक्ति। भजनते माम अनन्य भाग साधु रेवसव मंतव्य, he is considered as good as a sadhu. And then what happens? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम मतलब वेरी फास्ट, बहुत जल्दी। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसको धर्मात्मा माना जाएगा। शाश्वत शांति में निगच्छति, उसको शाश्वत शांति मिले। एंड देन कृष्णा टेल्स अर्जुना, अर्जुना बोल कौनते है प्रतिजानी, कौनते है मतलब अर्जुना को बोलते हैं डिक्लेयर नामे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त कभी नाश नहीं होगा, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। सो वन थिंग इज फॉर श्योर, दिस इज द बेस्ट LIC पॉलिसी। कभी ना कभी आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा, लॉस कभी नहीं। सो वन में आस्क, ओके सो व्हाट दिस, इसका ऑफ कोर्स देयर इज अ वेरी नाइस भाव गिवन बाय द आचार्यस। नाउ इफ यू रीड भक्ति विनोद ठाकुर, he has given two interpretations of the Bhagavad Gita. One is Vidvat Bhanchana and one is Rasik Ranjan. Now what is Rasik Ranjan? जो रसिक लोग रहते हैं, भगवान का जो रस भाव से लेना चाहते हैं, उनके लिए रसिक रंजन लिखा गया। एंड विद्वत भंजनी मतलब जो फिलोसफिकल कैलकुलेशन से जो जीते हैं ना, उनके लिए विद्वत हिसाब से लिखा है। एंड इन दैट दिस टू वर्सेस आर इंटरप्रेटेड वेरी नाइसली। Api chet suduracharo. Again I am repeating the same verse, but here see the context what is given. Api chet suduracharo bhajante mam ananya bhag. यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं सबसे दुराचार क्या कौन था? गोपियाँ थी। Technically gopis are left their husband and went to Krishna, so that is आचरण के हिसाब से दुराचार। मगर क्या किया उन्होंने? भजनते माम अनन्य भाग, आके उन्होंने मेरा भजन किया। सी दिस इज व्हाट इज रसिक रंजनी। एक रसिक भाव ये हुआ कि वन समवन सेज कि भाई दुराचार मतलब दैट डजंट मीन, दुराचार डजंट मीन ओनली बैड एक्टिविटीज। हियर एज पर द वर्ल्डली कॉन्टेक्स्ट what the gopis did was durachar as per the worldly context. You are leaving a husband in the middle of the night, you are going to an other person. Here it is not looks Krishna. From the worldly angle he goes to you are going to another man. But
It is like bhajante mam ananya bhag. Always they are chanting the name of the Lord. Sadhureva so mantavya. They are considered as sadhu. Then Shiprashanti, that is, he says that is why he says that is why they are considered sadhus. They are as good as sadhus. You don't have to worry about them. They are as good as sadhus. Now one question will raise, okay Prabhuji, fine, we will not do this activities like doubting, samshay nahi aayega, faith rahega, hum jhoot bhi nahi bolenge with the spiritual master and everything. But why did she give up the body? Why did Sati give up the body? She wanted to prove that that is the end destination for one who persists in that activity. Had she come and said sorry to Shivji, had she begged forgiveness for the sins committed by her, the story would have been different. Now, before that, let us understand something more important in this. How could Sati actually behave like that? Yeah, exactly. It's a very funny question, right? When a very funny situation. Let's go back to another Leela which happened in Ramchandraji's Balakanda. We all know about Shivji coming to see Lord Krishna in the small child form. भूतनाथ बन के आए थे कि भाई मुझे भगवान को दर्शन लेना है, और यशोदा मैया ने बोला नहीं नहीं जाओ, तुमको देख के डर जाएगा. एंड देन कृष्ण रोने लगे, एंड देन इमीडिएटली the other gopis and friends of यशोदा मैया sent one of the gopis and they said चलो बाबा तुम दूर कर सकते हो क्या, लगता है किसी भूत ने पकड़ा है, हमारा बच्चा रोते जा रहा है. एंड देन शिवजी केम, हाँ मैं तो एक्सपर्ट हूँ भूत भगाने में, भूतनाथ तुम है. And then he came and he got the darshan of the Lord alone. He went inside and took the darshan of the Lord alone. Same Leela happened in Ram Leela also. Ramchandraji was a small child, and Kaushalya Mata, Baki sab Kaikeyi, sab that time they were all in a loving and caring to Lord Ramchandraji and all the other brothers also. So Shivji यहाँ पे इस in case of Ramchandra ji के लीला में he was not alone. He took Kagabhushandi ji along with him. तो Kagabhushandi ji और वो दोनों शिव जी दोनों गए. चलो हाँ Kagabhushandi ji, you don't know? हाँ Kagabhushandi ji actually was a sage in the earlier birth who was cursed with, there was a fight between two sages, and actually one sage was doing devotion in a cave, in a nice place, in a nice ashram. And another sage came in and he said, chalo, can we share? I will also like to do bhajan. Then both started fighting. How come you are coming in my ashram and you want to do devotion? So you are like a crow. You become a crow. So this fellow also cursed him. The other fellow also cursed him. May you become a snake. This fellow became a crow and that fellow became a snake. Then Lord Brahma came, hey, stop, both of you stop fighting. Don't stop cursing each other. Stop it. So they both stopped cursing each other. And then they both got a chance to take part in various leelas. The crow became none other than Kagabhushandi ji, who took part in Ramchandra ji's leela. Ramcharitmanas में उसका विस्तार में विवरण है Kagabhushandi ji का. And the snake was none other than Kalya. That's why he was not killed by Lord. See, the only, so to say, Asura or enemy of the Vrajavasis, but Lord never killed him, only punished him by putting his footprints. So that's also prasad of the Lord. Getting footprint of the Lord on the head is also a prasad. So, Kagabhushandi ji को साथ में लिया, बोला चलो जाके रामचंद्र जी का बाल स्वरूप का दर्शन करके आते हैं. चलो अभी क्या करेंगे, अभी ये टाइम क्या ड्रेसअप मेकअप करेंगे, बोला चलो हम ज्योतिष बन के जाते हैं, विल बी एस्ट्रोलॉजर्स, एंड रामचंद्र जी का हाथ पढ़ेंगे ऐसा बोल के हम लोग बच्चे का हाथ पढ़ते हैं, इस हिसाब से भगवान का दर्शन करने जाते हैं लोग. कागभूषणी जी बन गए असिस्टेंट और ये बन गए एस्ट्रोलॉजर. दोनों गए, पोती वोती लेके जा उठा के ले गए दोनों. अभी अंदर जाएं कैसे, घुसे कैसे, एंट्री कैसे मिले, तो
उस उपवन के बाहर सामने ही लोग बैठे थे, यहाँ पे बाहर बैठे थे। तो एक जो दासी थी, वो दासी अंदर बाहर घूम रही थी, तो दासी को बुलाया, देखो ये बाबा जी हैं, काकभूषण जी ने बुलाया उनको, देखो ये बाबा जी हैं, बड़े ज्योतिष हैं, इनको हाथ दिखाओ, इनको हाथ दिखाओ और आपका पूरा भविष्य बता देंगे। तो दासी बोली अच्छा हाथ दिखाएंगे, बताएंगे, ठीक। उन्होंने हाथ दिखाया तो शिव जी ने हाथ देख के बोल दिया आपका भविष्य, जाके बोलो, अंदर जाके बोलो, किसी को और अपना भविष्य दिखाना है तो, मतलब क्या होता है, फ्री बीज देते हैं ना, सैंपल, फ्री सैंपल, आजकल मार्केटिंग में होता है ना, फ्री सैंपल देते हैं, तो और सैंपल बीज दिया तो और लोग आएंगे। तो जाके अंदर बोलो, और किसी को कुछ देखना है तो बाबा जी बड़े बड़े सिद्ध बाबा जी हनुमान हिमालय से आए हैं, इनसे हाथ दिखाया इनको। अच्छा, तो गई अंदर गई, अंदर जाके दासी ने जाके बोला कि देखो ऐसे ऐसे एक बाबा आया हुआ है, हिमालय से आया हुआ है, बहुत सिद्ध बाबा हैं, और आप उसको हाथ दिखा सकते हैं और भविष्य दिखा देंगे। तो दिखाना है, बच्चों को हाथ दिखाना है। तो दासी ने इतना बोला तो नो लाइक शी गॉट कन्विंस्ड, मेरा हाथ दिखाया मैंने, उसने भी हाथ देख के बोला, सब बोला, तो ठीक है। तो द कौशल्या माता गॉट कन्विंस्ड, चलो उसको हाथ दिखाते हैं, इनको रामचंद्र जी का हाथ दिखाते हैं। तो दासी गई, बोला, दासी को बोला जाके बुला के लेके आओ। तो दासी गई बाहर, हाँ अंदर से बुलाया है, दोनों खुश, यस, गुरु और चेला दोनों तैयार हो गए जाने के लिए। 1 मिनट, सॉरी, एक जन का परमिशन है, वे कौन जाएगा बोलो। अभी बोला ठीक है, चेले को यहाँ बैठने दो, मैं चलता हूँ, मैं ये हाथ देखने वाला हूँ। इतने में काकभूषण जी ने आवाज़ दिया, पूरा दिन पोती मैं उठा के घूमा, हाँ, और जब दर्शन का वक्त आ गया आप अकेले जा रहे हो, कैसे चलेगा ये, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सो यू विल हैव टू डू वन थिंग, इफ़ यू गो अलोन आई विल स्पिल द बीन्स, मैं भांडा फोड़ दूंगा। शिव जी बोले अरे यार इसको लफड़ा है, बोल देगा, असलियत पोल खोल देगा, तो अब क्या करें। तो देखो मैं ज्योतिष पढ़ सकता हूँ, पर क्या अगर मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरी नज़रें अभी कमज़ोर हो गई है ना, माई आई साइड इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, इट इज़ बिकम वीक। सो आई टेक दिस चेला विथ मी, ही रीड्स द हैंड परफेक्टली एंड आई डू द प्रिडिक्शन परफेक्टली। नहीं ऐसा तो उसको चलने दो, उसको चलने दो। बोला इसको चलने दो, आप रुको, ये हाथ देख के ही बोल देगा, ये आज की आंखें अच्छी है, आप रुक जाओ। तो भगवान ने उसको देखा, तो तुरंत काकभूषण जी बोले हाँ सबका अपना अपना भाग्य होता है, ये भाग्यों का खेल है। तो इतने में शिव जी बोले वाह, आधा दिन पोती क्या उठा लिया, भाग्य के बारे में बातें करने लगा, ठीक है जाओ। तो शिव जी बोला छोड़ूंगा नहीं, साथ में जाएंगे तो साथ में, तो दोनों नहीं जाएंगे। somehow they convinced that, देखो ये देखेगा, मैं बोलूँगा, then only it will be a perfect match, you know, we are a package like। फाइनली she took that permission, दोनों को अंदर ले लिया, गए रामचंद्र जी का दर्शन किया, had a very nice दर्शन, रामचंद्र जी हाथ पकड़ा, देखा। The prediction was something great about it, but the main purpose was taking the darshan of the Lord in the Bala Swarupa। सब लेके बाहर आए, सब बाहर आने के बाद काकभूषण जी बोले देखो मेरे वजह से तुम्हारा एंट्री हुआ। शिव जी बोला कहाँ का, तेरे वजह से, मेरे वजह से एंट्री हुआ, मैं इतना परफेक्ट ज्योतिष बताया वो दासी का, इसके लिए। इतने में वो दासी आई, ना आपके वजह से ना आपके वजह से हुआ, मेरे वजह से हुआ, अगर मैं नहीं रहती है ना तो तुम लोग दोनों का एंट्री अंदर नहीं होता। तो आप कौन है, ठीक से पहचाने नहीं, मैं तो सती हूँ। इट वॉज नन अदर देन सती। सो सती actually was a catalyst in completing the reaction. She fastened up. She was the main person who was involved in getting both of them together. That is Shivji and Kagbhushan ji with Lord Ramchandra ji. Then how come such a lady could behave like this? Please understand this. How could such a lady behave like this? जो माता ने शिव जी का मिलन करवाया रामचंद्र जी के साथ एक दासी बन के, वो औरत को संशय हो गया
वो औरत के मन में अविश्वास हो गया, वो औरत ने झूठ बोला. See, you have to understand, these are all activities, roles played by great personalities. As I told you, how come Narad Muni, who was instructed Ved Vyas to write the Bhagavat, the same Narad Muni was confused when Bhakti Devi was seen in Vrindavan with her the two children, Gyan and Vairagi, in the old form. She didn't know what to do. He read the entire Vedas, he read the Bhagavad Gita, but he didn't realize the same instruction which he had given for about Bhagavatam to Ved Vyas, he is supposed to read that. He played a role of ignorant person, and he tried to glorify the four Kumaras. From the Kumaras he took the instruction, नहीं भाई इनको भागवत सुनाओ तो इनका भक्ति revive होगा. It is said by acharyas, when a child is small and is trying to walk, the mother catches the hand and says, come on, चलो आ जाओ, आगे आ जाओ. And माँ क्या करती है? उल्टा चलती है कि उसको सीधा चलना नहीं आता है. कभी माँ उल्टा क्यों चलती है? ताकि बच्चा सीधा चले. तो कई बार these great personalities play such a role to enhance our knowledge, to give us this knowledge that we are supposed to keep ourselves away from these mistakes. If we don't keep ourselves away from these mistakes, we will land up in a big problem. Our devotion life will go for a toss. Mind you, everywhere it is written that there are bright chances for you to come back. But what if one lifetime is lost? Lord says in the Bhagavad Gita that अगर आपकी भक्ति अगर अधूरी रह गई तो आपको अच्छा जन्म मिलेगा और वापस आपको भक्ति करने का चांस मिलेगा. But again, one more birth means one more chance of losing. Example is Jad Bharat Maharaj. One small mistake, पूरा जीवन घर बार राज्य सब छोड़ के, राज्य का सुख छोड़ के जंगल में आया और एक मन लग गया हिरण के ऊपर, और पूरा जीवन का तपस्या, though it didn't go waste, but the time got elongated. Why we should elongate? As it is, we have billions and trillions of birth. We have suffered enough in this material world. Why we want to suffer more? Or rather be separated from the Lord more. Rather we go very fast. See, Lord is bhavagrahi. Lord wants to just taste our feelings. See, always I say, He is not interested in what we can offer Him. The only thing He wants is our mind. अपना मन चाहिए उनको. He is not interested in. हम लोग क्या करेंगे? सब चीज़ देंगे मगर मन भगवान को कभी नहीं देंगे. मन हमारा पास रखेंगे, मन भौतिक विषयों की चीज़ों पे लगाएंगे और दिमाग जो है वो भगवान पे लगा देंगे. या कभी कभार थोड़ा बहुत वंस इन अ व्हाइल भगवान ध्यान रखना, मेरे पे ध्यान रखना, बस बोल के वी आर बैक इन अवर मटेरियल एक्टिविटीज़. बट दैट इज़ नॉट व्हाट लॉर्ड वांट्स. लॉर्ड वांट्स अवर माइंड, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट to offer for us. We are ready to offer everything, but not that. And unless and until one doesn't progress in devotion, there is no possibility. You will have to slowly migrate in one of the rasabhav, either as Sakhya ras or Dasya ras और वात्सल्य रस और माधुरी रस. कोई ना कोई एक रस भाव में जाएंगे तो ही आप भगवान के साथ enjoy कर पाएंगे. Unless until one doesn't go into the progress into the rasbhav, okay, just mechanically doing things are not going to fructify in the long run. Initially, yes, the process is mechanical, but then in due course of time, what is the meaning of the word senior? Senior मतलब क्या है? Who knows just all the intricacies of the process? No, that doesn't make you a senior, in devotion at least. In material world, the definition of senior may be different, but in spiritual world, the definition of senior is much different. And that definition is one becomes closer to God by involving in one of the rasabha. I'll tell you one story of, okay, I'll make it fast. एक रसभाव को एक स्टोरी बता. एक कृष्णदास बोल के एक व्यक्ति थे वृंदावन.
ही यूज्ड टू बी इन नंदगांव, एंड उनका एक ही सेवा था, भगवान को हार बना के देते थे. एंड इट इज मेंशन दैट एनीवन who does any one seva without any break for 12 years, that seva becomes siddha. Siddha matlab he is able to interact with God one to one, eye to eye, he can see God. And this is mentioned by Bhishma Pitamaha in Mahabharata in Anushasan Parvat. भीष्म पितामह अनुशासन पर्वत में कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना कोई ब्रेक, बिकॉज विदाउट अ ब्रेक इट इज वेरी डिफिकल्ट, 12 years if one does a seva sincerely. How many of you all are planning to do it? 12 years, unbroken seva. Any one seva you take. You cook for the Lord, you serve the Lord, you dress up the Lord, whatever seva you do. 12 years without a break. Chanting is also included in that chanting. वो तो मजबूरी से करते हैं आधे तो. हाँ, provided you do it without aparadh, yes. Without aparadh, yes. Then chanting is also included. It becomes siddha. Why you want to wait for 12 years? Chanting can make you siddha in 1 second. One Shuddha Naam and you are eye to eye with the Lord. One Shuddha Naam. Why we chant so many rounds every day? The main purpose is, भगवान है ना, इतना अपना पूरा चैंटिंग राउंड्स का एक बड़ा थैली खोलेंगे और उसमें से देखेंगे ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं, ये तो पिक्चर के बारे में सोच के चैंट कर रहा था, ये तो खाना की भूख लगी थी तो खाने के बारे में सोच के चैंट कर रहा था, ये हरि नाम तो ऐसे सोते सोते ऐसे झपकी लेते लेते कर रहा था. तो ऐसा कर करके सब फेंकने के बाद एक आदमी मिल गया, चलो इस पर मर्सी कोटा दे के ले ले. अदरवाइज वन नेम इज इनफ टू, यू डोंट हैव टू चैंट सो मच. वन नेम इज इनफ. बट कैसा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ओ आज ऑफिस का काम रह गया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, अरे ये काम रह गया. सो ये चैंटिंग में सिद्ध होना मुश्किल है. तो सेवा करके सिद्ध कर सकते हैं. यस, चैंटिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सेवा, इज ऑल्सो वन ऑफ द सेवास. तो when this was confirmed, so he was doing, when he completed 12 years, you know, after 10 years he started doing countdown. अभी 2 साल बाकी है, 1.5 साल बाकी है, अभी 1 साल बाकी है, अभी 6 महीना, 1 महीना, 15 दिन, 10, 5, 4, 3, 2. Now it was a last day. So he came, offered garland to the Lord, and बहुत दुखी हो गया. कल से मैं नहीं आऊँगा, कल से मैं नहीं आऊँगा, कल तुझे आना है मेरे पास, आज लास्ट डे. एज पर द रूल बुक सिद्ध हो जाना चाहिए, तो मैं हार लेके आया हूँ, बट आपके लिए मैंने कल आपको हार पहनने के लिए आपको मेरे घर पे आना है, और मैंने आपके लिए 56 भोग बना के रखा है. सो ही प्रिपेयर्ड 56 भोग दैट डे मॉर्निंग, नेक्स्ट डे मॉर्निंग. बट वेल गोइंग ही वॉज लिटिल सैड, अभी से मैं सेवा नहीं करने वाला हूँ. मतलब 12 ईयर्स जो व्यक्ति कंटिन्यूस कर चुका है उसके लिए इट बिकम्स ए डिफॉल्ट सेटिंग. सो ही सेड नेक्स्ट डे मॉर्निंग अब मैं नहीं आऊँगा तो आपको आना है, बोल के चला गया. घर पे जाके बढ़िया 56 भोग बना के रखा भगवान के लिए, हार भी बना के रखा. एंड इज़ वेटिंग 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 वेटिंग. सुबह से लेके भूखा बैठा है, आएंगे अभी आएंगे प्रभु, आएंगे आएंगे आएंगे. शाम हो गया, अभी तक कुछ आने का ठिकाना नहीं. फाइनली इट वॉज नाइट. नाइट हो गया. बोला चीटर है, बड़ा छलिया है, बड़ा चीटर है, कुछ काम का नहीं. सो मच फॉर हिम ओनली. मैंने अच्छा उसके एवरेज में मैंने कुछ मांगा, स्वर्ग मांगा, बीबी मांगा, बच्चा मांगा, गाड़ी मांगा. दैट्स व्हाट जनरली वी डू ना. हमने थोड़ा बहुत सेवा किया, उसके सामने हम कुछ ना कुछ मेटेरियलिस्टिकली मांगते हैं, या कम से कम मेरे दुख दूर हो जाए, मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मेरा रोग ठीक हो जाए, कुछ ना कुछ मांगते हैं. मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने इतना ही मांगा कि प्रभु आप आज आ जाओ सिद्ध होके, मुझे आज हार पहनने के लिए आप मेरे घर पे आओ. और नंदगांव में क्या होता है, कौन कौन होता है? कृष्ण और बलराम होते हैं, और कोई नहीं होते हैं. यू सी ऑल ऑफ यू रिमेंबर ना, नंदगांव मंदिर में सिर्फ कृष्ण और बलराम के विग्रह होते हैं. ऑफ कोर्स वृषभानु एंड सॉरी यशोदा एंड नंद बाबा एंड ऑल दैट इज दैट, बट मेन इज विग्रह इज कृष्ण एंड वहाँ राधा रानी कुछ नहीं होते. बोले यहाँ कुछ नहीं होगा, मैं जाता हूँ यहाँ से.
सुबह से ये भी भूखे, मैं जाता हूँ बरसाना जाता हूँ, आई विल गो टू बरसाना, वहाँ राधा रानी के शरण में चला जाता हूँ। उठाया 56 भोग उठाया, हार उठाया, जो भी बना के रखा सब उठा के बाहर निकला। रात को 11 बजे देखा तो रास्ते में पूरा गाय का एकदम नदी बह रहा है, सब गायें जा रही है, सब ऑल काउज आर गोइंग। शी वाज वंडरिंग व्हाट इज दिस, ऑल सो मेनी काउज आर गोइंग, लुकिंग हियर एंड देयर। बोला अब तो आई कांट क्रॉस ऑल्सो, इट्स लाइक सो मेनी काउज, लेट मी वेट एंड स्टैंड। इतने में एक ग्वाल बाल आया वहाँ से, हाँक रहा है, बढ़िया सा पगड़ी बांध के, धोती पहन के, हाथ में लट रख के आया। अरे हे इधर आ, ये क्या है, किसकी गैया है रात को ये टाइम पे, इतनी गैया, कितना और बाकी है? बोला बाबा बहुत टाइम लगेगा, बैठ जाओ। बोला क्यों? 9 लाख गायें हैं। बोला क्या 9 लाख गायें हैं? नंद बाबा के हैं क्या? हाँ नंद बाबा के। चल चल, नंद बाबा का गाय कहाँ से आएगा यहाँ पे? अरे दिन में नहीं आती हैं, ये रात के समय में आती हैं। अभी तो कुछ 1000-2000 गाय हुई है, 9 लाख गाय बाकी है, तो आप बैठ जाओ। बोला पूरा मतलब इट्स लाइक होल 9 लाख काउज मीन्स सो मेनी काउज। बोला अभी सब जाएंगे? हाँ बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। तो बैठ गया, तो ये भी आके वाल भी बाजू में बैठ गया। क्या बाबा कुछ खाने के लिए है क्या? भूख लगा है? भूख लगा है? हाँ भूख तो मुझे भी लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है मैंने भी, तो 56 भोग है मेरे पास, खाएगा? बोला हाँ खिलाओ खिलाओ, खाएंगे तो खाएंगे। खोला, बोला आप भी खाओ, हमको भी खिलाओ। तो भगवान ने ऑफ़र किया, मतलब कृष्णदास ऑफर्ड हिम, ही सेड देखो मेरे हाथ पूरे गोबर से गंदे हैं, आपको खिलाना है तो खिला दो। तो एक निवाला वो खा रहे हैं और एक निवाला उस ग्वाल बाल को खिला रहे हैं। खिलाते खिलाते ही रियलाइज्ड, ओह who are you, why have you come here, who are you, from where have you come? He said देखो I have come here because I thought you are going to put me in garland, मुझे हार पहनाओगे। हार तो पड़ा है उनके बैग में। ओह so you are none other than कृष्णा। पूरा दिन वेट किया, अभी आया? क्यों आया? नहीं जान, अभी मेरे को कुछ लेना देना नहीं है तुझसे, खाना नहीं खिलाऊंगा, जा। कृष्ण बोल रहे अरे ऐसा कैसा, मैं आया ना, आपने 12 ईयर कंप्लीशन मैंने जो भी आपका टर्म्स एंड कंडीशंस था उस सब मैंने कंप्लीट किया। मैं खुद आया, आपके हाथ से आपका 56 भोग खाया, अभी हार तो पहनाओ, हार पहनाने को तैयार नहीं हो? बिल्कुल नहीं, यू हैव नॉट कम फॉर मी, you have come because I am leaving Nandgam and going to Barsana. Immediately this fellow packed up the whole पोटली उसकी and बस गांव के गायों के बीच में घुस गया वो। He pushed himself in between the cows and this fellow came and caught his hand, threw his hand off, उन्होंने झटका दे दिया हाथ, मैं जाना है। और अरे रुको, मैं आया हूँ और क्या चाहिए तुमको, दर्शन दे चुका हूँ, अब कहाँ जा रहे हो? नहीं अब तो मुझे रुकना ही नहीं है, अब तो मुझे तुझसे बात भी नहीं करना, तुझे देखना भी नहीं है। जब मैं सिर्फ नंदगांव से बरसाना जाने के लिए तैयार हो गया तो तू आया दर्शन के लिए, तब तक तू आया नहीं। अगर मैं बरसाने में जाके बैठूंगा तब तो तुझे रोज आना ही पड़ेगा, क्योंकि राधा रानी को तो मिलने तुझे आना ही आना है। सो ही लेफ्ट। सो आचार्य कैन से दैट दिस इज द रस भाव ऑफ द डिवोटीज। So if one wants to connect with Lord, it is only and only possible with some rasa. If you do mechanical devotion, it will remain mechanical. Maybe Mirabai, she got connected with God through the rasa bhav of Madhurya Ras. As a wife, she got connected. You see, any devotee, he can get connected by any of the rasa bhav. So it is very important. So that is how you progress in devotion. But during progress, 3 चीज़ों से बचना है। कौन से 3 चीज़ें हैं? अविश्वास नहीं होना चाहिए, there should be loss of faith, there should be no doubt in the words of the spiritual master, because only through Shastra one can know who is God. And last but not the least, never lie to the spiritual master. If you are going for a material break, tell your spiritual master, I am going for a material break, no problem. But never lie.
Lying to the spiritual master is one of the biggest aparadhs. And all these three things, when Sati could not save herself, what is the position of ours? This is very important. Okay, anybody has got any doubts, questions, can ask. You can close the recording.